Hi everyone, welcome back once again to my channel Insightful Maths. The topic for today is ratio and proportion, which is a class 6 topic. So, all the things that we are going to learn in today's session are what is a ratio, the difference between the ratio and a fraction, equivalent ratios, what is a proportion and the terms which are related to proportion and the unitary method. So these are all the topics which are there in this chapter. So please see the video till end and sit along with a book, a notebook and a pen. Stop the video in between. If you have any questions, if I'm giving you, you have to solve the question and don't forget to write your answer in the comment option. So let's begin the session. Let us understand what is a ratio. A ratio means whenever we have any two quantities and we need to compare them. So comparison is basically done using two methods, either a subtraction method or a division method. For example, if I say one person, let's say these are two person A and B. A has 20 pens and B has 25 pen. I need to compare how much more, how much less. So if I say how many more pen B is having as compared to A, comparison we are doing about with these two numbers. So what we'll do, we subtract 25 minus 20. We'll get 5. This is a subtraction method. But if I have to compare it using the division, you know how many times or what is the ratio between B and A, that is decided by or that is explained using a ratio. For example, if I say in a class there are 20, let's say there are 20 boys and there are 15 girls. Let's take it this way. In a class there are 20 boys and 15 girls. I need to know what is the ratio here. अब ratio का क्या मतलब है? Ratio means first of all it is written using the symbol this colon. Boys ratio girls is the number of boys is 20 here, number of girls is 15 here. Write this in the simplest form. 5 into 4 is 20, 5 into 3 is 15. That means the placement of the students in a class is such that for every 4 boys which are being added to one particular class, 3 girls to be added. The ratio has to be maintained. For example, if in a class there are 8 boys and I need to decide how many girls I need to input, this ratio has to be maintained. For every 4 boys, 3 girl children should be there in the class. So how do you convert 4 to 8? This is multiplied by 2. Similarly, this denominator again has to be multiplied by 2 and answer is 6 here. So every 8 boys, 6 girls should be there in the class. ठीक है? Another example of ratio could be, for example, I have a fruit basket. Okay, I have a fruit basket. I have to maintain a ratio of oranges to apples. What is the ratio? For every 2 oranges, 1 apple should be there. I have to maintain the ratio in such a manner. For every 2 oranges, 1 apple should be included in the basket. Now let's say I am having 20 oranges. So how many apples do I need for maintaining the ratio? अब आप देखो what is the relationship between orange and apple. Oranges are 2 times of apple. है ना? They are twice of apple. So which number multiplied by 2 will give you 20? That is 10 undoubtedly. अब आप ratio देखो. 2 orange upon apple. This is 2 by 1. 20 upon 10. It is again the simplest form is 2 upon 1. So ratio is a way of comparison wherein we use division. Okay, and it is always mentioned in the simplest form using this symbol, this two vertical lines which are vertical dots which are colon. How do we read it? We read it as is to. If it is written something like this, we read it as 3 is to 4, 4 is to 5. Okay, so whenever a ratio is being asked, you have to use the division method. It has to be written in the simplest form and we read it as is to, this one. Okay, let's take one more example. If the cost of maths book
If the cost of maths book is 500 and the cost of science book is 250 rupees, we have to find the ratio of the cost of maths book to the science book. किस चीज का रेशियो निकालना है? कॉस्ट. पहले लिखा है कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक, द कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक रेशियो द कॉस्ट ऑफ साइंस बुक. इसका हमें रेशियो चाहिए. द कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक इज 500, द कॉस्ट ऑफ साइंस बुक इज 250. हम रेशियो निकाल रहे हैं. इट हैज टू बी रिटन इन अ डिविजन वे. 0 and 0 cancel, and we know that 25 into 1, 25 into 2. So what is the ratio? Ratio is 2:1. अब इसका मतलब क्या है रेशियो का? The cost of maths book is 2 times the cost of science book. Okay, we can interpret it like this. The cost of maths book, it is 2. 2 कैसे आया? 1 का twice. The cost of maths book is twice the cost of science book. ठीक है, अब आप रेशो आराम से निकाल सकते हो if any two numbers are given, but there is a prerequisite. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी होती है, रेशो between any two numbers can be found if and only if both the numbers are in the same unit. Okay, for example, अगर मैं आपसे कहती हूँ what is the ratio of 1 meter to 1 centimeter, if this is the question, what is the ratio 1 meter to 1 centimeter, तो आपको ये नहीं सोचना number is 1 here, number is 1 here, ratio is 1:1. That is incorrect, because one number is in meter, another number is in centimeter. जब तक ये दोनों नंबर एक ही यूनिट में नहीं होंगे तब तक आप रेशो नहीं निकाल सकते. दैट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. एडवाइजेबल ऑलवेज कन्वर्ट द बिगर यूनिट टू द स्मॉलर वन. ऐसा क्यों? जब हम बड़े को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन इज इन्वॉल्व्ड, लेकिन स्मॉलर टू बिगर इट इज डिविजन. सो एट टाइम्स द कैलकुलेशन में बिकम डिफिकल्ट. तो आप बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल 1 meter is 100 centimeter. So instead of writing 1 meter here, I can write 100 centimeter also. So this is 100 centimeter ratio 1 centimeter. अब दोनों सेंटीमीटर में है ना, अब आप रेशो निकाल सकते हो. This is already simplified. Answer is 100:1. ठीक है? This you need to keep in mind that we can find the ratio of two numbers if and only if both the numbers are in the same unit. Now अभी हमने बात किया कि रेशो इज रिटन इन अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन. अगर मैं 3/4 लिखती हूँ या 3:4, ऐसा तो फ्रैक्शन भी हमें दिखता है. 1 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर, है ना. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेशो एंड अ फ्रैक्शन? प्लीज अंडरस्टैंड, इफ आई से 3/4 एज अ फ्रैक्शन, this denominator means the total parts and numerator means how many parts we have taken out of total 4, right? So that means if let's say this is a complete circle which is divided into 4 parts, denominator 4. Out of this, if I take 3 parts, this shaded portion is 3/4. It makes sense, 3 out of 4. लेकिन रेशो में ऐसा नहीं है. अगर मैं आपको बोलती हूँ गर्ल्स रेशो बॉयज इज 3:4, अगर मैं इसे फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगी तो दैट मीन्स आउट ऑफ टोटल 4 बॉयज, देखो गर्ल्स रेशो बॉयज हमने कितना लिया? 3/4. डिनोमिनेटर इज 4. डिनोमिनेटर क्या है? नंबर ऑफ बॉयज. तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन लूंगी दैट मीन्स आउट ऑफ 4 बॉयज 3 आर गर्ल्स. इज इट मेकिंग सेंस? It is not making sense, right? So there is a difference between the ratio and a fraction. Fraction tells you how many parts of complete whole you are carrying. Ratio looks like a fraction, but it is not a fraction. It is giving you the relationship between any two quantities. अब quantity क्या हो सकता है? Relationship between two weight, two height, two marks, right? It can be the two distances, any two things which are of the same category. That is a ratio comparison between two numbers. Fraction means the part of the whole. ठीक है? So I hope with this example you have understood what is the difference between a ratio and a fraction. Moving on to the next topic,
फाइंडिंग द रेशोज व्हेन द यूनिट्स आर नॉट सेम, हमने जो अभी अभी डिस्कस किया, अगर आपका यूनिट सेम नहीं है तो आप रेशो नहीं निकाल पाएंगे. स्टेप नंबर 1 हैज टू बी दे बोथ हैव टू बी इन सेम यूनिट्स. यूनिट कन्वर्जन के लिए यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप हाउ डू वी डू द कन्वर्जन. एक चीज हम याद रखते हैं, किंग हेनरी डाइड, mother didn't cry much. This K stands for kilo, H stands for hecto, D stands for deca. This capital M is the standard unit. For example, it is meter, liter, gram. अगर आपका क्वेश्चन मीटर में है तो आप इसको मीटर मानोगे, लीटर में है तो लीटर, ग्राम में है तो ग्राम. These three are the standard units. D stands for deci. आप ध्यान दो यहाँ पे दो D हैं. Capital D is deca, small is deci, small c this is centi and small m is milli. अब आप देखो देर इज अ गैप ऑफ 10 टाइम्स बिटवीन ईच टू नंबर्स. 10 का इन सब में गैप होता है. जब भी हम राइट जाते हैं, वेन एवर वी आर मूविंग राइट, वी हैव टू मल्टीप्लाई. ऐसा क्यों? किलो इज आउट ऑफ द गिवन यूनिट्स, किलो इज द ग्रेटेस्ट यूनिट, मिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं इट इज मल्टीप्लीकेशन, एंड वेन एवर वी आर गोइंग रिवर्स इट इज अ डिविजन. इतनी चीज हम याद रखेंगे. गोइंग राइट इज मल्टीप्लीकेशन, गोइंग लेफ्ट इज डिविजन. अब किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वो हम देखते हैं. इफ आई से आई हैव 1 लीटर, इट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर. अब ये लीटर कहाँ पे है? दिस इज द पोजीशन ऑफ लीटर. मुझे लीटर से मिलीलीटर तक जाना है. एम आई गोइंग राइट और लेफ्ट? मैं अभी लीटर पर हूं, मुझे आंसर किस में चाहिए? मिलीलीटर में. तो लीटर से मिलीलीटर मुझे राइट आना है. एक चीज कंफर्म है, मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो दिस नंबर 1 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ समथिंग. किससे मल्टीप्लाई करना है? अब आप देखोगे हाउ मेनी जम्प्स यू नीड टू टेक. 1 2 and 3. 3 jumps mean 3 बार इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. इट इज नॉट 30, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 10 इज 1000. तो अगर आप 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो सो 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर. ओके, वंस अगेन इफ आई से 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर. 1 किलोमीटर मीन्स मैं यहां पर हूं, मीटर तक आना है ना, आंसर हमें मीटर में चाहिए. किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन होगा. कितनी जंप चाहिए? 1 2 and 3. 3 jump means 3 zeros. Multiplication with 1000. Answer is 1000 meter. One more example. For example, if I say 10 decimeter is equal to dash millimeter. मैं अभी कहाँ पर हूं? मैं अभी डेसीमीटर में हूं. आंसर मुझे चाहिए मिलीमीटर में. ठीक है, हम फिर से राइट जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना होगा. कितनी जंप हमने लगाया डेसी से मिली? 1 and 2. 2 jump means 2 zeros which come in 100. तो जो भी डेसीमीटर वाला नंबर है इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी चेंज टू मिलीमीटर. So 10 into 100 it is again 1000 millimeter. I hope this much is understood. So ये practice से ही होगा. This is not difficult and this you might already be knowing. Okay. So keep practicing this conversion so that you do not get stuck anywhere in between. Let us take few examples to find the ratio when the units are not same. If I say I have to find the ratio of 1 kilometer ratio 10 meter. मैंने क्या बोला था आपको? बिगर क्वांटिटी हैज टू बी कन्वर्टेड टू स्मॉलर क्वांटिटी. आउट ऑफ किलोमीटर एंड मीटर, किलोमीटर इज बिगर. 1 kilometer is 1000 meter. So rather than writing kilometer, it is 1000 ratio 10. दोनों मीटर में हो गए. आप 0 up 0 down cancel. Answer is 100 ratio 1. Correct? Another one.
अब मान लो आपका नंबर डेसिमल में है, हाउ टू डू फॉर डेसिमल? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज 1.5 सेंटीमीटर रेशो 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, आप ये याद रखो, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। एक यूनिट सेंटीमीटर है, एक यूनिट मिलीमीटर है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सेंटीमीटर इज अ बिगर नंबर। अब सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर बनाना है, आप देखो ओनली वन जंप इज इंक्लूडेड, वन जंप मीन्स 10। तो सेंटीमीटर का जो भी नंबर है अगर आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हो दैट विल बी कन्वर्टेड टू मिलीमीटर। हमारे पास सेंटीमीटर का नंबर है 1.5, सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स को? पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 10 इट इज 150। क्वेश्चन में जितनी डिजिट डेसिमल के राइट में है आंसर में भी उतना ही होना चाहिए, 1 digit to the right of decimal, so in the question in the answer also 1 digit to the right of decimal। आप डेसिमल यहाँ पे लगाओगे 1 पोजीशन बैक, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस वन। सो ये नंबर क्या बन गया? दिस इज 15 मिलीमीटर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी विल राइट 15 मिलीमीटर। दूसरा नंबर मेरे पास है 0.5 मिलीमीटर, अभी दोनों मिलीमीटर में हो गए ना, लेट मी राइट इट एज अ फ्रैक्शन, 15 अपॉन 0.5। अब आप देखो अगर मुझे ये डेसिमल हटाना है, डेसिमल के राइट में देयर इज ओनली 1 digit, हम 0.5 को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? 0.5 इज 5 अपॉन 10, डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट होती है ना बस उतने जीरो से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर अगर मैं 0.5 को हटाती हूँ तो ये तो 5 अपॉन 10 बन जाएगा, बट ये 10 में नीचे थोड़ी ना लिखूंगी, 5 इज ऑलरेडी द डिनोमिनेटर, सो दिस 10 विल गो अप। अब मेरे पास क्या बचा? 150 अपॉन 5, लेट अस सिंप्लीफाई इट, 5 1 5, 5 3 15 along with the 0, so answer is 30:1। this much is understood। Let's move now to the another topic. Like we know what are equivalent fractions, in the similar manner we have equivalent ratios. Any two ratios which just look different but they are equal in value, they are known as equivalent ratio। You can see here, out of total two parts, if one part is shaded, हम इसे 1:2 लिखेंगे। Out of total 4 parts, 2 parts are shaded, it is 2:4, and this similarly is 3:6। अब आप तीनों पिक्चर में देखो, half of the circle is shaded, है ना, तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, but we have different fractions or the ratios for the same। तीनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, दे आर जस्ट लुकिंग डिफरेंट एज अ नंबर। आप देखो 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2, 3/6 again the simplest form is 1/2। So equivalent ratios are the ratios which are equal in value, they just look different। ठीक है, अगर मेरे पास एक रेशो गिवन हो, मैं उसके कितने इक्विवेलेंट रेशो बना सकती हूँ? आंसर इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेशो है 3/4, मुझे एक और रेशो चाहिए विच इज इक्वल टू दिस वन। You can just multiply the numerator and denominator by any common number of your choice। It can be 2/2, 3/3, 4/4, कुछ भी ले सकते हो, it has to be same। 3 into 2 is 6 and 4 into 2 is 8। So 3/4 या 6/8 एक ही बात होती है। Why is that so? 6 और 8 दोबारा 2 की टेबल में आते हैं ना, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8। देखो the value is again same। Okay, so equivalent ratios are the ratios which just look different but they are equal in value। Now another topic is how do we compare two ratios। अगर मेरे पास दो रेशो गिवन है और मुझे जानना है उनमें से which one is greater or smaller or if they are equal, how to do that? First method is finding the simplest form। अगर एक रेशो है मेरे पास 20/40, another ratio is 30/60,
मुझे जानना है if they are equal or not equal. What we can do? Find the simplest form. 20/40 का simplest form is 1/2. Similarly, 30/60 again the simplest form is 1/2. दोनों का simplest form is same, so yes the ratios are equal. एक चीज हुआ, हम simplest form देख लेते हैं. दूसरी चीज is cross multiplication method. अब cross multiplication क्या होता है? If I have a ratio 2/3, another ratio is 20/30. ठीक है? I'm talking about cross multiplication. This denominator will move to left. This denominator will move to right. अब left में क्या बना? 2 into 30. Right में बना 20 into 3. 2 into 30, that is 60, and 20 into 3 is again 60. दोनों नंबर दोनों साइड इक्वल आया है, so they are equal to each other. अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म से करती तब भी आंसर सेम आता. 20/30, 0 0 कैंसिल, ये भी 2/3 है. सो दीज आर जस्ट डिफरेंट मेथड. या तो आप दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो. अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो इक्वल है, अदरवाइज नॉट. Let's take an example. I have two ratios 4/7 and 3/5. मुझे जानना है if they are equal or not. Let me use the cross multiplication method. 5 will go left, 7 will go right. So left number is 4 into 5, right number is 7 into 3. 5 into 4 is 20, 7 into 3 is 21. आप देखो दोनों नंबर अलग अलग है, तो ये इक्वल तो नहीं है. जिस साइड का नंबर बिगर है दैट इज अ बिगर रेशो. आप देखो राइट हैंड साइड इज बिगर हियर, सो दैट मीन्स 3/5 इज अ बिगर रेशो देन 4/7. ये एक मेथड है कंपैरिजन का. लास्ट मेथड वी ऑल नो इज द एलसीएम मेथड, जो हम फ्रैक्शंस में भी यूज करते हैं. एलसीएम मीन्स टेकिंग द एलसीएम फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जैसे मान लो आई हैव 2/3 एंड 4/5. मुझे जानना है यूजिंग द एलसीएम मेथड. सो एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15. दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाना है. 5 up, 5 down, and here 3 up and 3 down, just to make the denominators equal to LCM. 5 into 2, this is 10/15, and 4 into 3, this is 12/15. अब तो हम कंपेयर कर सकते हैं. 12/15 is greater than 10/15, so right hand side is greater. ठीक है? These are the three methods for comparing any two ratios. Either you can simplest form, find the simplest form. Either you can do the cross multiplication, or the longest one is finding the LCM and then comparing which one is greater or which one is smaller. Clear? Now, next topic is what is a proportion. From the beginning, what we are doing, if we are comparing just any two numbers, we are using this symbol ratio. तो ratio क्या होता है? Whenever you compare any two numbers, we use ratio. But if two ratios are being compared, अगर ये number है ये A and this is B, first ratio is A is to B, another one is C is to D, ये भी ratio है, ये भी ratio है. If I have to compare these ratios, I have to use a proportion. Proportion has the symbol this colon repeated twice. जो ratio वाला symbol होता है, it has to be repeated twice. This symbol is the symbol of proportion. So two numbers or two quantities are compared using ratios. Two ratios are compared using proportion. अब ये proportion क्या होता है? Whenever any two ratios are equal to each other or they are equivalent, we just say that they are in proportion. इसका क्या मतलब हुआ? If A ratio B is equal to C ratio D. Ratio का मतलब is writing it as a fraction. So if A upon B is equal to C upon D, the simplest form, we say that these four numbers A, B, C, D, they are in proportion to each other. ठीक है?
दिस फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स. ओके, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, these are known as extreme terms. एंड B एंड C, इन्हें हम बोलते हैं या तो मीन टर्म और मिडिल टर्म. एक ही बात है, because sometimes in the question it is being asked what are the extreme terms and what are the mean terms here. So you should know this name. How do we know that two ratios are equal? First way is find the ratio of the first two numbers, find the ratio of next two numbers. If both are equal, then of course they are equivalent, they are in proportion. दूसरी चीज, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताया था, आप वो भी चेक कर सकते हो. इफ यू टेक D टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड B टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? AD, राइट हैंड साइड बनेगा BC. If the product of AD and BC is equal, then also the four numbers are in proportion. Correct? Or we can say that the product of the extremes, this one, should be equal to the product of the means. अगर ऐसा होता है, four numbers are in proportion. Let us take an example for you to understand ये proportion हम कैसे check करते हैं. I am giving you four numbers. 2:4 is in proportion to 4:8. For example, this is the question. This is A, this is B, this is C, this is D. My question is, what are the extreme terms here? First term and the last term. 2 and 8. ये दोनों हो गया extreme terms. Which are the mean or the middle terms? You just take these two, दोनों सेम ही है. 4 is the mean or the middle term. अब हमें जानना है ये जो रिलेशनशिप है, are these four number in proportion? तो हम क्या करेंगे? Take the ratio of first two numbers, take the ratio of next two numbers and find the simplest form. This is 1/2 and this is again 1/2. We are seeing that the simplest form of both the ratios is equal. Answer is yes, they are in proportion. Right? अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाला चीज यूज करना है, 2/4 and this is 4/8. 8 will go here, 4 will go there. 2 into 8, 4 into 4. This is also 16, this is also 16. Both the sides are equal. Yes, four numbers are in proportion. Let us take another example. Okay. If I take number 3:15 is in proportion to let me take some other number. It is in proportion to 20:100. I need to know if these four numbers are in proportion or not. Again, हम क्या करेंगे? Find the ratio of first two numbers. Find the ratio of next two numbers. This is one method. दोनों का simplest form check करो. This is 1/5 and this is again 1/5. दोनों का simplest form is same. They are equal. Yes, these four numbers are in proportion. आपको अगर simplest form नहीं निकालना है, so you can use this method. Product of extreme and product of mean should be equal. 3 up extreme कौन सा है? 3 और 100. So 3 into 100 should be equal to 15 into 20. The product 300, product is again 300. This is equal. Yes, these four numbers are in proportion. Which are the extreme terms here? First and the last one. 3 and 100. Extreme. Which are the mean or the middle terms? 15 and 20. Done? Sorted? So this is all about proportion. Mean term, extreme terms, product of extremes and product of mean should be equal. Or we can say that if two ratios are equal to each other, they are said to be in proportion. Last topic of this chapter now is unitary method. As the name itself is having this word unit. Unit means one. So it is such a method wherein we first find the cost of 1 unit
एंड देन फ्रॉम 1 यूनिट वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी. देखो, अगर ज्यादा की वैल्यू पता हो, सिंपल सी चीज है, वेन एवर द कॉस्ट ऑफ मैनी इज गिवन एंड द कॉस्ट ऑफ वन इज रिक्वायर्ड, वी ऑलवेज डिवाइड. ज्यादा से कम पर आते हैं तो वी डिवाइड, एक से फिर ज्यादा पे जाते हैं तो वी मल्टीप्लाई. दिस लॉजिक वी हैव टू यूज वाइल यूजिंग द क्वेश्चन, वाइल डूइंग द क्वेश्चन इन यूनिटरी मेथड. ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. सपोज वी बाय 5 kg ऑफ शुगर फॉर ₹100. 5 kg, मैंने 5 किलो शुगर खरीदा है फॉर ₹100. द कॉस्ट ऑफ मैनी इज गिवन, 5 kg का कॉस्ट गिवन है. मान लो मुझे खाली 1 kg का चाहिए. अभी हमने क्या देखा, मैनी से जब 1 पे जाते हैं वी हैव टू डिवाइड द नंबर्स, है ना. मैनी से 1, मुझे कौन सा नंबर 1 करना है, ये जो केजी वाला नंबर है ना, ये 1 करना है. अब 5 दोनों साइड तो इक्वल है, 5 kg एंड ₹100, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर मैं दोनों जगह 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 डिवाइडेड बाय 5, ये 1 kg बना, तो 1 kg की कॉस्ट कितना आया, 100/5, आंसर इज ₹20. राइट, सो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर मेरे पास आ गया 20. अब आप देखो, अगर मेरे पास 1 kg की कॉस्ट आ गई है ₹20, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी, लेट्स से 15 kg. अब अगर 1 kg की कॉस्ट मुझे पता है दैट इज ₹20, आई नीड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 kg. 1 का पता है, ज्यादा का निकालना है. देखो, 1 से मैनी जब जाते हैं तो क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई. 1 को 15 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इंटू 15. अगर लेफ्ट साइड में इंटू 15 किया है तो राइट साइड भी इंटू 15 करना पड़ेगा. 15 इंटू 20, आंसर इज 300. करेक्ट. I'll just give you a trick how to decide that with which number you have to decide, you have to divide with. Take an example. If I say the cost of 18 apples, the cost of 18 apples is ₹180. Find the cost of 12 apples. मैंने पूछा find the cost of 12 apples. एक चीज हम याद रखेंगे, what is the given information, जो चीज हमें पूरा पता है. 18 एप्पल्स का कॉस्ट है ₹180. पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं. 18 apples, they are connected to ₹180, है ना. हमें दोनों साइड पता है, दोनों are connected to each other. हमें क्या निकालना है, we have to find the cost of 12 apples. आप ये चीज याद रखो, जो चीज निकालनी होती है, क्वेश्चन में मुझसे कॉस्ट पूछा गया है तो गिवन इंफॉर्मेशन का जो कॉस्ट वाला पार्ट है वो आप राइट में रखेंगे. ठीक है, अभी मैं इसका रिवर्स भी करूंगी. कॉस्ट वाला पार्ट, हमसे कॉस्ट पूछा गया है ना, तो कॉस्ट वाला पार्ट आप राइट में रखोगे. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लेफ्ट वाला नंबर नाउ गोज डाउन. 18 एप्पल को अब आप 1 एप्पल बना दोगे, है ना. यूनिटरी मेथड है तो पहले हम यूनिट का 1 का निकालते हैं, फिर ज्यादा का निकालते हैं. ये जो 18 लेफ्ट वाला नंबर है ना, नाउ इट विल गो डाउन इन द राइट हैंड साइड. 180 डिवाइडेड बाय 18, ₹10 आ गया. अब 1 की कॉस्ट पता है, 12 की निकालनी है. राइट, 1 का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सो द कॉस्ट ऑफ 12 apples is 12 multiplied by 10. Answer is ₹120. ठीक है, अब हम इसको रिवर्स करते हैं. गिवन इंफॉर्मेशन इज अगेन सेम. 18 एप्पल्स की कॉस्ट है ₹180. नाउ माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी परचेस्ड फॉर ₹120. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है. अब मैंने आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी एप्पल्स. आई एम आस्किंग यू द नंबर ऑफ एप्पल. ये है नंबर ऑफ एप्पल और ये है कॉस्ट. आई एम आस्किंग यू हाउ मैनी एप्पल. व्हाट डिड आई जस्ट से इन द बिगिनिंग,
जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है गिवन इंफॉर्मेशन का, वो पार्ट राइट हैंड साइड में जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब आप फ्लिप कर दो। ₹180 इज इक्वल टू 18 एप्पल्स। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ एप्पल निकालना है। जो चीज निकालना है वो राइट हैंड साइड पे शुरू से ही जाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, नंबर ऑफ एप्पल्स, यहाँ पर 18 एप्पल्स था ना, सॉरी, और ₹180, लेफ्ट वाला नंबर गोज डाउन। अभी ₹180 है, अब मैं इसे ₹1 बना देती हूँ। लेफ्ट वाला नंबर हैज टू गो डाउन, इट इज 18 अपॉन 180, दिस इज द एप्पल्स। ये नंबर ऑफ एप्पल्स चल रहा है अभी, ठीक है। 18 वन सा 18, 18 10 सा 180, फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, 1/10 एप्पल्स। ₹1 में कितने एप्पल आते हैं ये मुझे पता है। मुझे कितने रुपीज में चाहिए, ₹120 में। ₹1 की क्वांटिटी पता है, 120 ज्यादा का चाहिए, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो फॉर ₹120 इट शुड बी 1/10, जो गिवन नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 120। जीरो अप जीरो डाउन कैंसिल, आंसर इज 12 एप्पल्स। ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, कौन सा लेफ्ट में रखना है कौन सा राइट में रखना है, यू विल ऑलवेज एंड अप कीपिंग द बिगर नंबर अप एंड स्मॉलर नंबर डाउन, राइट, एंड इट मे create a confusion at times. I hope this much is clear. Now I am writing one more question here, and I expect you all to do this question and put the answer in the comment option, right? So question now is, the cost of 15-liter diesel. The cost of 15-liter diesel is ₹450. The cost of 15-liter diesel is ₹450. Find the cost of 13 लीटर ऑफ डीजल। मैंने आपसे कॉस्ट पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 लीटर ऑफ डीजल, दैट्स माय क्वेश्चन. So I expect you to please solve this question and don't forget to write the answer in comment. This is all about ratio and proportion. It was just the introduction video wherein the topics are being covered. In the next video, we'll be doing the exercise questions. So in that one particular video, all the things will be done. All the questions will be done. लेकिन वो आप तब कर पाओगे when you already know the concepts. ठीक है? So please do not forget to like and subscribe this channel. Please share it with your friends also. Let them also get benefited. And thank you so very much for watching. Take care.